नमस्ते। मुझे बात करनी थी एक ऐसी शय की, एक ऐसी चीज की, एक ऐसे तत्व की कि जो शाश्वत भी है और विश्वव्यापी है। प्रेम, बलिदान। तो काफी कुछ लिखा गया है इसके बारे में। बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े फिलसफों ने क्या क्या कुछ नहीं लिखा, मगर एक गीत जो है मुकेश का गाया हुआ, इंदिवर का लिखा हुआ और कल्याण जी आनंद जी का कंपोज किया हुआ फिल्म पूर्व और पश्चिम के लिए, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्या बात है। ये जो गीत है बड़ा प्यारा गीत है और हम जब कॉलेज से फिल्म देखने गए तो बहुत बेहद पसंद किया सबने। कुछ तो रोते थे और कुछ खुश थे। एक दो ऐसे भी थे, गुजराती थे, तो चूहे का जो अंदर जाने का जो होता है उससे क्या कहते हैं, दीवार के अंदर जो छिद्र होता है उसे गुजराती में दर कहते हैं। तो बोलते यार ये तो कोई चूहा गा रहा है अपनी चूही के लिए, मेरा दर खुला है। क्या बात है, वगैरह वगैरह। आई मीन ऑल काइंड्स। बट इस गीत की जो जो मासूमियत जो है, जो जो उसमें जो कविता है और जो कॉम्पोजिशन जो है, बहुत सुंदर। और मनोज कुमार ने उसे ठीक से लिया था। इट कुड हैव बीन डन बेटर, बट हे, हु एम आई टू से दैट। बट मजे की बात यह है कि 72 में when I was in America, a fresh student had come from India, and he and I became acquainted, and like he was doing his studying something, and he was doing well. One day we were together, and he told me, he said, I have to write something about poetry or philosophy or something. And I'm not much good at English because I haven't studied or I haven't read much of English literature. But I have this song which is very dear to me. And it also is part of my tragic love story. And I want to translate that into English and present it. I said, which song are you talking about? So he told me, this Koi Jab Tumhaara Hriday Tod. And I said, wow, what a beautiful choice. He said, could you please translate that for me? I said, yeah. ऐसे गानों का ट्रांसलेशन करना तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा हम कोशिश जरूर करेंगे, बट वो जो सुंदरता, जो सौंदर्य हिंदी शब्द में जो है वो अंग्रेजी में कभी नहीं आ सकता। एटलीस्ट मुझसे तो नहीं आएगा। बोलते कैसे भी करो, मगर the original song is so beautiful that even a bad translation would look good. He didn't say that, of course, in so many words, but I knew what he meant, and I agreed. So I don't remember how I translated it, but I did. And I tried to make it as poetic as possible in my own way, which wasn't very good anyway. And 2 or 3 days later, he presented that piece of prose. Actually, it's not, hardly you can call it poetry. It was definitely not verse. And he presented that. And believe me, he not only got standing ovation, he also got a very good grade. तो ये शब्द की, जज्बात की, भावना की जीत है, हमारी नहीं। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। वाह वाह, क्या बात है। ब्यूटीफुल सॉन्ग।
तो ये बात है ना. These and it's amazing. I have always been amazed and awe-stricken that our lyricist, I'm sure it's true with Bengali as well as Tamil and Telugu and Malayalam lyricists too, but I know about Hindi, of course, that they write and the music directors compose on demand. It's so difficult. कि चलो भाई ये सिचुएशन है, गाना लिखो. गाना अच्छा होना चाहिए, पहले किसी ने ऐसा कुछ लिखा न होना चाहिए, मिलता जुलता हो अलग बात है, but it should not be very similar and it should appeal to people. It should be poetic and yet not too hi-fi, and then it has to be composed in such a way by the composer that लोग उसे गुनगुना सके, गा सके. कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो कोई गा नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है. ठीक है, अच्छे हैं, बट ऐसे भी बहुत गाने हैं कि जो आदमी पहली बार सुने और दिमाग में उसकी जो धुन है, जो उसका जो ट्यून है, वो बैठ जाता है. जैसे कि मेरा जूता है जापानी. I mean, everybody can sing it, good, bad, doesn't matter. मेरा जूता है जापानी, ये पटलून इंग्लिशतानी. It's such a flow, and that's the beauty of our film songs, that they are universal, can be sung by anybody and everybody, and the meaning is most of the times also universal. It applies to all cultures. It goes across the cultures. तो ये बात है. What was the other antara of that song? I can't think of it now. Anyway, but it was a good song. And I felt good that I translated that, and my friend got good grade. And I had the pleasure, I would call it an honor. I wish I could have sent the translation to Hindi. मगर उस जमाने में तो ये कोई सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, तो हम एक दूसरों को दिखाते थे, पढ़ाते थे और मजे लेते थे. एनीवे, चलो, नमस्कार.